Hello students. Now taking our chapter ahead, discussion should continue because we have to complete our syllabus. So we will be discussing in economics chapter 3, money and credit. We have just seen the loan activity of bank. So we have seen the person, those who are having surplus money, they deposit in the bank and banks pay interest to the person who is deposited and also lending money to those who are needed and charging high rate of interest. The difference between the rate of interest to the depositor and to the borrower, that is the income of the bank. This is the way bank functions. Today, in this particular class, now we are going to discuss about the sources of credit. Because ultimately what we have seen that banks are playing an important role as a lending money, as a providing credit, loan, credit the. So, how one can borrow loans? How we can borrow loans? What are the sources of those credit? So, if we are going to see in our society, we can find two different things as a means of credit. Usually, people try to get loan from the banks. But before going to bank, a person has to prepare very well in terms of documentation and a number of formalities are there. So on a number of occasions, people just ignore to visit the banks. And on a number of occasions, people do not have such kind of documentation. So usually what we do, we just borrow the money from our friend, any relatives, even any money lender, just living beside our house. To take money from them, to lend money from them, to borrow money from them, there is no need to have any paper at all. Only we have to go over there and just make a request. And that depends upon personal relations. So have you ever noticed that what are the consequences of these two types of credit? And what are the nature of these two credits? Now we are going to discuss about these two sources of credit. This is also called sectors of credit. First is called formal sector of credit and the second is called informal sector of credit. So there are two types of sources of credit. Formal sector of credit and informal sectors of credit. What do you mean by formal sectors of credit? Remember, formal sectors of credit perform as per the laws. There must be some supervisory authority that supervise their functioning. For example, banks and cooperatives. Banks and cooperatives are the two important formal sectors of credit. We have discussed there is a supervising organization that supervises the functioning of the bank, that is RBI. In a similar fashion, cooperative societies are also regulated by the laws made by the government time to time. So they are bound to follow those rules. Comparatively, when we are moving towards the informal sector of credit, see, informal sector of credit, money lenders, friends, traders, relatives, private finance companies. For example, nowadays we are visiting any shop to get a fridge
but we don't have that much of money in our pocket. So we just move to world of finance. There are a number of companies are sitting over there, representatives are sitting over there to finance, like Bajaj Finserv, SDFC, a number of private companies are there. They are financing EMIs. So we can get the goods at our home, only paying a partial payment. Even sometimes 0% down payment is needed and you can get the things. Even bikes, cars, all are available. So these are the informal sectors of credit. Even private companies are just getting some documentation signed. But these are very nominal things, and the terms of conditions depends upon them. They fix their rate of interest. Okay? So, as far as money lender is concerned, friends are concerned, parents are concerned, relatives are concerned, over here, it all depends personal negotiation. Rate of interest will be fixed depending upon the personal relationship. Whatever rate of interest has been fixed, if both the parties agree, you will be able to get the loan. This is one way. Now, features. See the features, then we can understand the difference between informal and formal sectors of credit. This is one of the important questions. You may be asked, what do you mean by informal sector of credit, or what do you mean by formal sector of credit? If we see this particular flowchart, you are able to write the answer. See the features. As far as formal sectors of credit is concerned, one has to pay low rate of interest. Means you can borrow credit from formal sectors of credit at low rate of interest. You have to pay low rate of interest. Very important. Next one, easy repayment. Why? Since the rate of interest is low, so you can save more. And that will be very much handy to repay your loan. So repayment is easy. In comparative to formal sector, if you see in formal sector, you will get high rate of interest. Means you have to pay more from your saving in the form of interest. So finally, you are saving less. So if you are paying high rate of interest, means you have to give more proportion of your saving in the form of interest. So when you are going to pay the principal, the money that you have borrowed, you have to pay that money also along with the interest. So if you are paying larger proportion of your income in the form of interest, you will be unable, you will be facing difficulty to repay your loan. Means high rate of interest, direct gives its consequences on the repayment. So over here repayment become difficult. Next, see in terms of formal sector credit, documentation required. Means if you are visiting any formal sector of credit, you have to submit a number of required documents related to your identification, related to your address proof, related to the property. Now I am coming about that. Means these sectors of credit usually lend money on behalf of the collateral deposited to them. Collateral मतलब क्या होता है? Some sorts of security. इसको हम लोग आम बोल जाते हैं भाषा में गिरवी रखना है. Means you are giving some sorts of things to banks or cooperatives to whom you are going to lend the money, that if I fail to repay the loan, bank or cooperatives, from whoever we have taken the loan, they may just occupy my asset, my property that I am going to just give in the form of collateral, and bank or cooperative may just get that much of money that they have borrowed to me after selling that particular property. So over here, collateral. Collateral means the security that is required by a borrower to deposit to the
money lender to the banks or the cooperatives. This is called collateral. You have been asked, what do you mean by collateral? The collateral refers to a security, a kind of security that banks and cooperatives accept against the loan. So these are the things that we need as far as while going to the banks or going to the cooperatives. Very important. Without documentation, you cannot get any loan, even a single paise. But see, in terms of informal sector credit, no documentation required. If you are going to your relative to get some sorts of money as a loan, no need, because that depends upon personal relationship. As far as private finance companies are concerned, minimum documentation is required, minimum. But in terms of this formal, over here less documentation is required. Next is collateral may not be needed. Collateral may not be needed until or unless you are not going to get a huge loan. There is no need to have the collateral. No, without collateral. If you are going to ask your family member or relative for the loan, they are not asking us give your land to me against your loan. So usually in informal sector of credit, no documentation is required and no collateral is needed generally. So these are the features. Over here, in formal sector of credit, even you are going to ask for a single paise, documentation required. And collateral is also one of the preconditions for getting loan. Something you have to give. So now, see the questions that may be asked from this particular topic. First of all, what do you mean by formal sectors of credit? Formal sectors of credit refers to banks and cooperatives that lend money at low rate of interest. Due to that, repayment will be easy. In that particular sector, for getting loan, no documentation or less documentation required, and collateral is also required. This is all about formal. And what about informal sector credit? It is also a source of credit that comprising money lenders, friends, traders, relatives, private finance companies. And informal sector of credit provides loan at high rate of interest. Due to that, repayment will be difficult. Over here, documentation and collateral may not be required. This is the definition, this is the way you can describe. So this way you will also able to write the answer of one more question. If you are going to ask, differentiate between formal sector of credit or informal sector of credit, you can easily ask how you will ask. The first difference, formal sector of credit includes banks and cooperative. Informal sector of credit includes this. Then after, write these features. This is the answer. And over here, you have to also write regarding the RBI. There is a supervisory organization that supervises the functioning of banks. Over here, there is no as such supervisory organization that regulate the functioning of this informal sector. No organization. Rather, it depends upon personal relationship. So this is the way you can differentiate about the formal sector of credit and informal sector of credit. One more thing. What you are seeing over here in terms of features over here and over here, do you know what does it mean? These are called terms of credit. What is terms of credit? Terms of क्रेडिट मतलब किस शर्त पे आपको उधार मिला, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सारे शब्दों को अगर एक शब्द में रिफ्लेक्ट करना चाहें तो आई हैव टू राइट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब दोनों के टर्म्स ऑफ क्रेडिट को अगर आप देखें
तो आप उस आधार पर भी लिख सकते हैं कि दोनों के टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या हो सकते। अब इसी टर्म्स ऑफ क्रेडिट को थोड़ा हम विस्तार से अब पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉपरेटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपरेटिव्स एंड हाउ कॉपरेटिव्स वर्क्स। तो पहले हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉपरेटिव्स के फंक्शनिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स व्हाट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब उधार की शर्तें, कर्ज की शर्तें, ठीक है, ये आपकी है कर्ज की शर्तें। तो कर्ज की शर्तें क्या होंगी और ये शर्त कौन फिक्स करेगा? तो शर्त फिक्स करेगी लोन देने वाला और लोन लेने वाला, जो जिसे चुकाना है वो जिसे देना है, उन दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो यूजुअली ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट के क्या क्या मायने होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है whenever a person borrows money from a lender, the money lender, certain terms and conditions settled. Certain terms and conditions settled. These terms and conditions are known as terms of credit. अब इसमें क्या क्या चीजें आती है? यहाँ से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स व्हाट। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसलिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का कंपोनेंट है वो है इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का मतलब है कि a person who borrowed the money had to pay some proportion of money in lieu of using the money of the lender. आप जो पैसा इस्तेमाल करेंगे दूसरे का, उस पैसे के इस्तेमाल का आप एक प्रकार से किराया देंगे। जैसे आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो आप उसके मकान यूज करते हैं, तो उसके बदले आप उसको किराया देते हैं। तो यहाँ उस मनी लेंडर को उसकी मनी के बदले उसकी मनी को आप यूज कर रहे हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो उसके बदले आप उसका इनाम उसको दोगे, उसके रिस्क का, उसने रिस्क लिया है आपको पैसा देकर, तो उसके बदले आप उसे कुछ दोगे एक रिवॉर्ड के रूप में। वो रिवॉर्ड इंटरेस्ट है। मनी लेंडर को जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट इस रूप में भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इंटरेस्ट रेट की बात करें, देखिए फॉर्मल सोर्स में यूजुअली ये 8 to 12% होते हैं यूजुअली, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। यूजुअली 8 से 12% फॉर एनम सालाना, जबकि इनफॉर्मल में देखिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम केसेस में तो ये 60% पर एनम होती है। 60% से ह्यूज इंटरेस्ट रेट। और ये कैसे बताया जाएगा कि 5% पर मंथ पे आपको मिलेगा। इवन अगर 2% मंथली पर पे तो 24% पर एनम हो गया। आप और कीजिए, कंपैरेटिवली गौर कीजिए, कई गुना अधिक। इसीलिए इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से आप जब लोन लेते हैं तो इट बिकम डिफिकल्ट टू रीपे, क्योंकि आपकी सेविंग का एक बड़ा पोर्शन तो केवल उसकी इंटरेस्ट में चल जाती है। बाकी जो उसका जो सम अमाउंट है जो आपने लोन लिया है वो तो आप दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देंगे कहाँ से? अपनी उसी इनकम से। नेक्स्ट आता है दूसरा जो शर्त होती है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने आपको कहा आम होता की भाषा में होता है गिरवी रखना। आप जो मनी लेंड करोगे तो जो मनी लेंडर है जो आपको मनी लेंड करेगा वो ये चाहेगा कि उसकी मनी जो आपको देगा उसकी सिक्योरिटी उसे मिले कि इन केस इफ यू फेल टू रीपे योर लोन व्हाट विल हैपन, हु विल टेक द गारंटी दैट द मनी विल बी रीपेड? कौन लेगा गारंटी? तो इसके बदले में वो आपसे सिक्योरिटी के रूप में उसी वैल्यू के आसपास की चीज आपसे मांगे, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इवन ऑर्नामेंट्स, कुछ भी हो सकता है। बट उसकी जो वैल्यू है इट मस्ट बी वेरी मच इक्वल टू द
मनी दैट यू आर गोइंग टू बॉरो। ये भी डिपेंड करती है मनी लेंडर के ऊपर और बोरोवर के, कि वो 50% 60% की सिक्योरिटी पर भी काम करते हैं, बट इट इज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन फॉर गेटिंग लोन स्पेशली फ्रॉम फॉरेन सेक्टर। लेकिन ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट आती है इनफॉर्मल में भी। अगर आप हेवी लोन में जाइए तो बोलेंगे आप ना जमीन का कागज दीजिए, ये यूजुअली प्रैक्टिस में है और हम और आप समझ अपने घरों में इसको सुनते भी होंगे और देखे भी होंगे। जो नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन में आपसे क्या मांगा जाता है? डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली रेफर्स करती है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ को लेकर के, आपकी एड्रेस प्रूफ को लेकर के और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी आपकी इनकम का प्रूफ कि आप कितना कमाते हैं। अगर मेरी आमदनी 10 रुपये हो और मैं सोचूंगा कि 1 करोड़ का मैं लोन लूँ, तो बैंक ये सोचेगी या कोई बंदा ये सोचेगा कि मैं चुकाऊंगा कर्ज, मेरे पास क्या है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में है। तो जैसे सैलरीड पर्सन अगर लोन लेने जाएंगे तो वो उनसे उनकी सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट मांगते हैं, सो दैट दे कुड एनालाइज की कितनी कैपेसिटी इस बंदे में लोन को रीपे करने की। यूजुअली ये प्रैक्टिस में है कि जो मेरी आमदनी होगी तो मैं अपनी आमदनी का 40% ही सेव कर सकता हूँ, 60% आई हैव टू जस्ट यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, चाहे वो भोजन के लिए हो, क्लोथिंग के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, इसके अलावा मेडिकल, 60% खर्च हो नहीं जाता है, तो 40% स्टैंडर्ड मानी जाती है कि आप बचा सकते हैं। तो नाउ द बैंक विल एनालाइज इस 40% में मेरी कैपेसिटी पे करने की कितनी कर सकती है, तभी वो मुझे लोन ग्रांट करेंगे। मेरी कैपेसिटी देखकर रीपेमेंट की कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द बैंक और द लेंडर फील्स दैट आई एम अनेबल टू पे द लोन बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, मुझे लोन नहीं देना चाहिए। क्योंकि लोन देना बड़ी बात नहीं है, लोन की वसूली बड़ी बात, और वसूली तभी होगी जब मेरी कैपेसिटी होगी। अब आप बोलेंगे मैं जमीन दे रहा हूँ, देखो जमीन लेना किसी का उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है मनी का फ्लो मिलना। नेक्स्ट है वो है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी लोन कब तक किस रूप में चुकाया जाएगा। ईएमआई मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी या एनुअली होगी, क्या होगा, ये मोड ऑफ रीपेमेंट। और साथ साथ इसमें ये भी चीज आती है कितना ईएमआई की रकम कितनी, ये चीजें इसमें आती है। मेथड्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी एक महीने पे होगी या 15 दिन पे होगी, कैसे ये रीपेमेंट होगी, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, वो जो भुगतान किया जाएगा पार्ट ईयर पेमेंट इन टुकड़ों में, वो कितना अमाउंट। और लास्ट है ड्यूरेशन ऑफ लोन, कितने समय के लिए लोन लिया जा रहा है, यानी कि इस समय के बाद यानी इस समय की पूरी होने की अवधि तक मनी शुड बी रिटर्न, जो लोन अमाउंट है वो चुकता हो जाना चाहिए। तो दीज आर द 5 basic things comprising the terms of credit and these are very much important। अब इससे आधार पर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, इनफॉर्मल में हाई, कोलेटरल फॉर्मल में रिक्वायर्ड, इनफॉर्मल में नॉट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मल में रिक्वायर्ड, ओवर देयर में नॉट रिक्वायर्ड, मोड ऑफ रीपेमेंट बोथ द वे मोड ऑफ रीपेमेंट इज फिक्स्ड, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लोन बोथ द वे इज फिक्स्ड। ये दोनों चीज तो सारे जगह आती ही हैं, इन दोनों में वो चर्चाएं नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये दोनों का ही इंटीग्रल पार्ट है, ये दोनों जगह शामिल है। तो ये बच्चों हो गई हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट का ये डिटेल। अब हम लोग इसमें कौन सी बातें हम लोग कॉपरेटिव्स को पढ़ेंगे। कॉपरेटिव्स क्या, चूँकि वो भी एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, सो हमें उसके विषय में भी जानना अति आवश्यक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का दूसरा पार्ट, यानी कि कॉपरेटिव्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द राइट्स।